of the Twin Towers have come crashing down and destroying a part of the boundary wall. This entire stretch here you see is 55,000 cubic meters of concrete and steel, and this is enormous. I also want you to notice how familiar these top floors look, because these were the top floors, the very towers that have become iconic images over the last 1 or 2 weeks that India Today has been telling you the story of this spectacle of shame and corruption. I'm Shiv Aroor. We've been tracking this story. We've been India's most watched channel on a coverage that spans not just the spectacle of a demolition, but the corruption. And today, we're going to name and shame those, every single one of them, unsparingly, that was responsible for what you see here. Twin towers of corruption gone. Monument of shame demolished. Who let these towers rise? The villains of Super Tech Twin Towers unmasked on 5 Live with Shiv Aroor. 3 minutes, we're going to give you information about the Twin Towers that you've never heard before. And we'll be the first channel to name, shame, and take the identities of those responsible for that spectacle you saw yesterday. And we don't take any shortcuts here. These are the headlines at 5. Lingayats here accused of raping minors claims conspiracy as he returns to Karnataka's Muruga Mutt. Politicians across party lines back this year. Massive protests in Jharkhand's Dumka after Ankita is set ablaze by her stalker Shahrukh. The accused is seen smiling after arrest. Chorus grows for death penalty. Delhi dangles set to escalate. Aam Aadmi Party MLAs to sit on dharna all night at the assembly. They are demanding resignation of the Delhi Lieutenant Governor. Days after dumping the Congress, Ghulam Nabi Azad fires fresh salvo at the Gandhis, claims he was betrayed and ousted by his own. Lords Modi, but refutes Congress's Modified DNA charge. उन्होंने घर छोड़ने पे मजबूर किया। आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं। अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। And Jio announces the big rollout of its 5G. Mukesh Ambani announces 2 lakh crore rupee package for the big Reliance Jio 5G rollout by Diwali. And that's it. With Jio 5G, we can connect everyone, every place and everything with the highest quality and the most affordable services. In addition to meeting India's needs, we are confident of offering digital solutions to world market. Now, the colony where I live happens to share a wall with the very site where the Twin Towers once stood. This was a skyscape which was once dominated by the Twin Towers. Now you can actually see the sky. Unfortunately, a part of the sky is still blotted out by this monstrosity. The 2 top floors of the Twin Towers that came crashing down onto this boundary wall, leaving in its wake a huge wake of destruction. Thousands of cubic meters of concrete and metal that will be sold to actually raise the funds to pay for the demolition itself. For the people of this colony, they're staring at least 2 or 3 months of heavy work, heavy earthworks, cranes, bulldozers, drills, and what have you, to clear this out. Because for them, they believe that this was a terribly close call. Take a look. This is where it has come crashing down, and look how near it is to the nearest residential tower. Just about 10 to 15 meters. Any closer, and it could have actually damaged it. The aftermath of the demolition
is something that has disturbed many. Many are still digesting return to their homes after their entire colonies have been covered in dust. Their lives have changed in some ways. Take a look. Gone in 9 seconds. And in those 9 seconds, dust and debris sprawled across the ground where the massive twin towers once stood. Hours after the most watched demolition in India, residents were allowed to return to their homes in nearby society. And as expected, the dust, quite literally, had not settled. It was only this morning that residents truly got a sense of the level of damage. This enormous top floor of the Supertech Twin Towers has crashed through the colony where I live, the wall. Thankfully, only a small bit of the boundary wall has actually been damaged. It could have been far worse. Just look at how close it is to one of the colony towers. It's just about 15 meters away. Very, very close call. But we are told that the engineers had actually calculated for this kind of margin of error, and they were pretty sure that there wouldn't be any damage to the actual colony towers. The dust levels have gone up in nearby societies as a layer of concrete dust remains spread across the road. Workers are now employed around the clock in attempting to clear the dust. Minimal damage was reported inside the homes, despite their close proximity to the now destroyed twin towers. This is an unoccupied flat where I see certain glasses shattered, no major again damage, only dust particles and certain, the concrete materials perhaps have come because of the implosion at this site. Rest of the other places have been totally clean, and that is where now you see a black sheet. Right behind that was Twin Tower. It has been demolished and the debris have not gone. Most residents have said clearing the dust is the biggest challenge, and authorities have issued health advisories in case some residents report respiratory problems. जितना डर था उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। घर साफ करके छोड़ के गई थी और वैसा ही मिला एकदम। स्मोक का प्रॉब्लम था जो हमारे घरों में अभी भी घुस गया है, डस्ट का, अब साफ कराएंगे आज। At the demolition site, work is underway to clear the debris, a task that will take over 3 months to complete. But the immediate focus is to ensure there are no undetonated explosives. Well, I think this was, again, an extremely challenging project because the building was of a very robust nature. Very difficult to blast and get it to behave and collapse the way you want it to. The symbol of corruption is now brought down, and India's biggest demolition has been a successful operation with minimal damage on ground. And we have the engineers and every single worker who was part of the project to thank. With Shiv Aroor and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today. And on this special broadcast, a super exclusive by the only channel with the guts to question the powers that be that were responsible for the building of the Twin Towers. R.K. Arora, chairman of Supertech, the company that got its clearances to build this and has defended the illegality of these Twin Towers despite the Supreme Court calling it the result of a nefarious collusion between Supertech and the Noida authorities. Here is R.K. Arora of Supertech in conversation with Rahul Kanwal. He's the man in the eye of a national storm. The demolition of the Supertech Twin Towers was watched by viewers all across the country. The man who helms this enterprise, R.K. Arora, hasn't spoken
to the media in an interview since this story gathered momentum and it became such a national issue. Joining us now, live and exclusive on the India Today news track, is R.K. Arora, chairperson of the Supertech Group. There are questions which I'm sure have been whirling in your mind. We'll try and put them to R.K. Arora over the next several minutes. Mr. Arora, welcome to India Today. I want to start by asking you question number one, which is to do with the original building plan for which you had sought sanction in 2005 under the Noida Area Building Regulations and Directions 1986. You were allowed to construct 14 towers with 10 floors, each up to a height of about 37 meters. You were given additional land, and then you had a plan which allowed you to build 15 floors, 15 towers with 11 floors. But ultimately what you ended up doing was having 40 floors in those two towers. So can you please explain at the outset how you went from the permissions that you'd originally sought to the tower which was ultimately demolished on Sunday? Mr. Arora. Thank you, Rahul. I'll just explain you. Actually, we are the developer and taking the approval from the authority. And here in sector 93, we got a one land from the authority in 2005. And the development का norms मैं आपको बताना चाहता हूँ कि development is basically on the basis of the FAR and the density, कि कितना उसके ऊपर घर बनेगा और कितने लोग रहेंगे. तो we have taken the approval in 2005, 2006, फिर 2009. Basically, it was every time it was the revision of the plan as per the rule. तो initially हम लोगों ने करीब 54,000 स्क्वायर मीटर लैंड के ऊपर ये अप्रूवल लिया. और अप्रूवल के लिए हमने इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो अप्रूवल लिया था वो 15 टावर का लिया था. एंड फर्दर उसके बाद 2 टावर का अप्रूवल और लिया. इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वाई द 15 टावर एंड वाई देन फर्दर 2 टावर, बिकॉज क्योंकि इनिशियली द FAR वाज 1.5 फ्रॉम द नोएडा अथॉरिटी एंड लेटर ऑन दिस वाज गोइंग टू इंक्रीज एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि अगर कोई 1.5 FAR से ज्यादा बनाना चाहता देन ही कैन टेक द परचेजेबल FAR. तो अकॉर्डिंगली हमने परचेजेबल FAR लिया. तो लाइक आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि फर्स्ट फेज वाज टेकन ऑफ 15 टावर और 15 टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 15 टावर का डिलीवरी 2009 में लोगों को दे दिया. बट आई टेल यू साइमल्टेनियसली कि 2 टावर फर्दर और भी थे उसमें जिसका अप्रूवल हमने कम हाइट का ले रखा था, बट कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया था. बिकॉज परचेजेबल FAR था सरकार की तरफ से, नोएडा की तरफ से, कि अगर आप इसमें एज पर पॉलिसी आप एक्स्ट्रा FAR लेना चाहते हो तो आपको इतना इतना पैसा जमा करना पड़ेगा. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 टावर वी हैव डिलीवर्ड टू द होम बायर इन एमरल्ड कोड. एंड 2009 में हमने दोबारा उसके ऊपर 2 टावर पे काम स्टार्ट किया और 2 टावर को हमने परचेजेबल FAR की पॉलिसी के नियमानुसार, मतलब एज पर द पॉलिसी ऑफ द बिल्डिंग बायलॉज, वी हैव मेड द रिवीजन इन द प्लान आफ्टर मेकिंग द payment to the authority. No, but the question, sir, is I was looking at the Supreme Court judgment in this case. Now, you were granted permission by the Noida Authority in November 2009 for the construction of the 2 towers. But you started construction in these 2 towers in July 2009. तो आपको तो सैंक्शन नोएडा के अथॉरिटीज द्वारा आपके कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद दी गई. सवाल बार बार ये उठ रहा है कि कैसे है कि आप नए प्लान देते गए, आपके नए प्लान को इजाजत मिलती गई और बगैर इजाजत के भी आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई. अरोड़ा जी, नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल लैंड के ऊपर इनिशियली 17 टावर अप्रूवल हुए थे, जिसमें 15 टावर
का पोजीशन दे दिया और 2 टावर वाज फॉर द हाइट ऑफ 11 स्टोरी, नॉट एट 24 या 40 इनिशियली वो था। तो जो आप कह रहे हो ना कि कंस्ट्रक्शन पहले चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन जो पहले स्टार्ट किया था वो ऑन द बेसिक अप्रूवल विच वाज प्लान्ड फॉर गो अप टू द 11 स्टोरी एंड विच वाज द प्लान्ड विद इन द FAR ऑफ 1.5। तो ऐसा कुछ नहीं था कि प्लान वाज ड्यूली अप्रूव्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं, पर सवाल ये भी है क्योंकि कई लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि सुपरटेक आगे चल के भी कंस्ट्रक्शन करता रहेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जिन लोगों ने इस तरह से इस टावर को खड़ा किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। उनको लगता है कोई कार्रवाई हुई नहीं। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू सी इट? मेनी पीपल से दैट मे बी सुपरटेक शुड बी बार्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग इन द फ्यूचर। हाउ आर यू सीइंग दिस क्वेश्चन? नो, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं नियम का कोई वायलेशन हुआ है। मुझे तो एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी को एक आम आदमी को घर का कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो ही इज़ गोइंग टू टेक द परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। चाहे आप ही, मैं कहता हूँ आपको ये अपना घर बनाना तो अथॉरिटी के पास जाओगे, अथॉरिटी से अप्रूवल लोगे और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करोगे। अकॉर्डिंगली हमने भी वही काम किया है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि किसी तरह का कोई वायलेशन था। देयर वॉज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी के तहत निर्माण किया गया। पॉलिसी के तहत जो है लोगों को 15 टावर का पोजीशन दिया। पॉलिसी के तहत बाकी 2 टावर को का निर्माण जो है 40 मंजिल तक अप्रूवल मिला। 40 मंजिल के अप्रूवल के बाद हमने अभी 32 मंजिल का तक था, अभी जहां स्टेज थी, अब 32 मंजिल पे आने के बाद ये काम रुक गया। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टॉपिंग द वर्क। द वर्क वाज स्टॉप्ड बिकॉज once we started the work on the twin tower and made the building up to 11th floor, which was initially approved, the few of and the later on we have revised after making the payment from the authority, वो उसको रिविजन प्लान अप्रूव करा दिया। तो कुछ होम बायर या जो 15 टावर के वो लोग थे उसमें से कुछ लोग दे हैव ऑब्जेक्टेड इट। उन्होंने बोला कि बिफोर गिविंग द फर्दर अप्रूवल ऑफ फॉर रेजिंग द हाइट फ्रॉम 11 स्टोरी टू द 24 स्टोरी एंड 24 स्टोरी टू 40 स्टोरी, दे मेड द सम ऑब्जेक्शंस ऑन इट कि अपार्टमेंट एक्ट में आपने हमारा कंसेंट नहीं लिया। मतलब वो लोग जो 15 टावर के लोग थे उन्होंने ये ऑब्जेक्शंस लगाए। No, but this is there in the UP Ownership of Flats Act 1975 and the UP Apartments Act 2010, which make it mandatory for real estate companies like yours to take permission of previous buyers and residents, जो आपने नहीं की। जब आपने कहा कि आप ये T16 और 17 को एडिशनल बड़ा करना चाहते हैं, आपने 24 से 40 फ्लोर करना चाहते हैं, आपने पहले बायर्स की इजाज़त नहीं ली। और साथ ही साथ वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, क्योंकि जो दोनों टावर्स के बीच में इलाका है उसमें कम से कम 16 मीटर या 18 मीटर का फासला होना चाहिए। आपने केवल 9 मीटर का फासला छोड़ा, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, एंड यू आर सेइंग कि कोई वायलेशन नहीं है नॉर्म्स का। देखो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, कि आपने जो बोला है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट 1975 और यूपी अपार्टमेंट ऑफ 2010, बेसिकली मैं एज ए डेवलपर अथॉरिटी के पास जाता हूं कि जी मेरा नक्शा पास कर दीजिए, तो वो नक्शा उसके ऊपर पास कर देते हैं। जो एक्ट का वायलेशन जो आप कह रहे हैं अपार्टमेंट एक्ट का, हमने कोई अपार्टमेंट एक्ट का वायलेशन नहीं किया, क्योंकि उस दौरान जिस दौरान ये नक्शा पास हो रहे थे अथॉरिटी के अंदर, नोएडा अथॉरिटी के अंदर अपार्टमेंट एक्ट एडॉप्ट ही नहीं था। और ये केवल हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं था, इट वाज फॉर द ऑल अप्रूवल इन द एरिया। जो जो अप्रूवल इस एरिया में करी गई 2010 टू 2014 तक कोई भी अपार्टमेंट एक्ट के ऊपर कंसेंट नहीं लिया जा रहा था। आप मुझे एक भी बिल्डिंग की अप्रूवल दिखा दीजिए कि जी इस बिल्डिंग को इन्होंने अपार्टमेंट एक्ट के ऊपर कंसेंट लिया, बिकॉज क्योंकि अपार्टमेंट वाज नॉट अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी एंड इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर द हाई कोर्ट जजमेंट। जैसे ही हमारा हाई कोर्ट का जजमेंट वहां से एडवर्स हो गया, देन उन्होंने पॉलिसी बनाई और उसको अडॉप्ट किया।
So I'll tell you, there was no violation in the building plan approval. As far as this distance is concerned, जो भी आपने बोला कि उसको 16 मीटर होना चाहिए था, as per the approved building plan, the distance between the two tower was 9.78 meter. वो आज भी था, तब तक था जब तक वो बिल्डिंग वहां पर थी, 9.8 मीटर था, जब मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज ओनली 6 मीटर. मतलब आप ये देखिए कि फायर के नॉर्म्स के लिए एक 20 फुट की जगह रिक्वायरमेंट होती है कि फायर की गाड़ी उसके अंदर से पास हो जाए, तो 20 फुट की जगह होती है. तो फायर का एनओसी भी, क्योंकि हम लोग जब बिल्डिंग को पास कराते हैं उस टाइम पे फायर का एनओसी भी हमको लेना होता है. फायर का एनओसी वाज इन प्लेस, स्ट्रक्चर एनओसी वाज इन प्लेस, 40 मंजिल का बिल्डिंग के हिसाब से फाउंडेशन का एनओसी वाज इन प्लेस, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एनओसी वाज इन प्लेस, ऑल एनओसी लाइक पावर कॉर्पोरेशन, ऑल एनओसी लाइक जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑल एनओसी फ्रॉम लाइक द यूपी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सारे एनओसी लेने के बाद तब बिल्डिंग पास होती है. राहुल जी, ऐसे बिल्डिंग कोई तो फिर ये सारी बातें सुन के सवाल ये उठता है अरोड़ा जी कि ये सारी अथॉरिटीज, ये सारी एजेंसीज सुपरटेक पे और आप पे इतनी मेहरबान क्यों थी? क्या आपको लगता है कि कुछ उन्होंने आपको स्पेशल फेवर्स किए या आपने उनको कोई स्पेशल फेवर्स किए जिसके तहत जो जो आप चाह रहे थे, जैसे जैसे आप अपने प्लान को अपग्रेड करना चाह रहे थे, दनादन आपको वहां पे सारे एनओसीज और अप्रूवल मिलते चले जा रहे थे? ऐसा कैसे हुआ? ये राहुल जी, कोई स्पेशल फेवर नहीं था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोगों को नहीं दिया गया. जो सबको दिया जा रहा था वो हमको दिया जा रहा था. सभी की बिल्डिंग इसी तरह से पास हो रही थी, हमारी बिल्डिंग भी इसी तरह से पास हो रही थी. हमारी बिल्डिंग भी उस रूल के तहत हुई है और सब दूसरों की बिल्डिंग भी उस रूल के तहत हुई है. बट इट वाज, हो सकता है कि भाई हम अथॉरिटी ने अपना पक्ष, क्योंकि अथॉरिटी को भी तो कोर्ट में बुलाया गया था, हाई कोर्ट में, तो अथॉरिटी ने भी वहां पर अपना पक्ष बराबर रखा कि जी ऑल द अप्रूवल आर इन प्लेस, सारी अप्रूवल बराबर हैं, उनका एफिडेविट लगा हुआ है, उनका काउंटर लगा हुआ है कि जी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई वायलेशन नहीं है. तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जी अप्रूविंग अथॉरिटी इज द सर्वोपरि होती है फॉर द बिल्डर, फॉर द डेवलपर, फॉर द इंडिविजुअल हाउस जो घर बना रहा है, उसके लिए भी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है. सो इट इज वेरी क्लियर, देयर वाज नो वायलेशन इन द कंस्ट्रक्शन, नो वायलेशन इन द बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एट ऑल. नहीं, पर जैसे ये जो मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि जो एक गार्डन स्पेस है टावर 1 के नजदीक, उसका इस्तेमाल हो गया टावर 17 के कंस्ट्रक्शन में, कि आपने दिखाया था ब्रोशर में गार्डन स्पेस और वहां पे भी आपने बना दिया टावर. हाँ, उसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा राहुल जी आपको. जैसे मैंने आपको बताया कि द प्रोजेक्ट वाज डिजाइन इन 2 फेज. पहला फेज 15 टावर का था, तो 15 टावर के प्रोपोर्शनेट कुछ ग्रीन रखना होता है, वो ग्रीन हमने बना के दिया, उसमें पार्क बना के दिया, लोगों को पोजीशन दिया, उसके लिए रिक्वायर पार्किंग दी, लोगों को पोजीशन दिया, क्लब दिया, सब बना के उसके प्रोपोर्शनेट हमने बना के दिया. वो एरिया जो हमने खाली दिखा रखा था अपने लेआउट में, उसको अगर वो कहने लगे जी ग्रीन है, तो इट वाज नॉट शोन इन आवर ब्रोशर एट ऑल. इट वाज ऑलवेज शोन एज अ वैकेंट स्पेस. द फ्यूचर प्लानिंग मीन्स दिस 2 टावर. तो उसके दिस 2 टावर के लिए रिक्वायर्ड पार्किंग, रिक्वायर्ड ग्रीन, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड कॉमन एरिया, वो इसके लिए हमने इधर तैयार किया. पार्किंग भी बनाई है. तो ऐसा कहीं नहीं प्लानिंग में है कि हम लोग ने कहीं ग्रीन के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाया है. नहीं, जो एफआईआर में पढ़ रहा था उसमें नोएडा अथॉरिटी के 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, 24 और सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्ज लगाए और सुपरटेक के साथ साठगांठ का उन पे आरोप लगाया गया और इसको एक एसआईटी ने भी प्रोब किया. इन तमाम अधिकारियों के साथ अरोड़ा जी पूरे देश ने उस डेमोलिशन को देखा. सीधे तौर पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इन तमाम नोएडा अथॉरिटीज़ के सीईओज, एसीओज, प्लानिंग असिस्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब के साथ आपका क्या रिश्ता रहा? देखिए, मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा, वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 40 ईयर सर. 40 सालों से काम कर रहे हैं. अप्रूवल कराते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अप्रूवल कराते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं. अप्रूवल कराने की अथॉरिटी
डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की होती है। हम एज ए डेवलपर अपनी चीज़ों को लेके जाते हैं। कोई चीज़ को हमने कहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द करप्शन एट ऑल। हमारा कोई करप्शन से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम होता है बिल्डिंग प्लान को अप्रूवल कराना एज पर द पॉलिसी, एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशंस, एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, उसके हिसाब से बिल्डिंग पास कराई जाती हैं। कोई किसी तरह का करप्शन इसमें नहीं है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि किसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, बट हमारा बिल्डिंग एज पर द पॉलिसी पास हुआ है और एज पर द लेआउट, एज पर द अप्रूवल हमने लोगों ने बिल्डिंग को तैयार किया था। संडे को जब ये टावर्स डिमोलिश हो रहे थे, आप कहाँ पे थे? क्या आपने देखा उन टावर्स को डिमोलिश होते हुए? और मैं देख रहा था डिमोलिश होते हुए लाइव, जिस वक्त पे आपके टावर्स डिमोलिश हो रहे थे, एज द चेयरमैन ऑफ सुपरटेक, आपके जहन में उस वक्त क्या बीत रहा था? देखिए सर, हम लोगों ने वो बिल्डिंग तैयार की, बहुत बड़ी मेहनत से तैयार करी। जब 2009 में हमने इसकी फाउंडेशन डाली तो उस टाइम पे यहाँ इतनी हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर नहीं था। तो हम लोगों ने, मैं पर्सनली, हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन ने ये बिल्डिंग का डिजाइन करके दिया, तो मैंने उनको फिर बुलाया कि कम विद मी एंड सिट विद मी, कि आपने जो बिल्डिंग डिजाइन की है क्या ये सिस्मिक जोन 4 के हिसाब से डिजाइन करी है? ही सेड यस, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाई। आई सेड कि भाई आई नीड दिस सिस्मिक जोन 5, एक जोन ऊपर के लिए चाहिए। कहता साहब स्टील बढ़ जाएगा, सीमेंट बढ़ जाएगा, फाउंडेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन आई सेड नो, आई वांट दी सेफ बिल्डिंग। मुझे आप मेरा स्ट्रक्चर में अगर मेरा 5 किलो स्टील ना लग के अगर 6 किलो स्टील भी लगता है तो आई विल मेक द पेमेंट। तो साहब जो आप मुझसे बात करिए ना कि इस दौरान आपको क्या लग रहा था, इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी कि जिस बिल्डिंग को मैंने पर्सनली हर चीज़ को डिजाइन कराते हुए ऐसी बिल्डिंग को सेफ डिजाइन कराया कि जो होम बायर जिसको भी रहेगा, जो भी रहेगा उस बिल्डिंग में, उसके लिए लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर तक की कमाई उस बिल्डिंग के अंदर लगेगी। और हम उस बिल्डिंग को परफेक्टली सेफ मैनर में स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ डिलीवर करना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा विजन था, बट इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि उस बिल्डिंग को उस दिन तोड़ा जा रहा था। उसके बारे में तो मैं अभी क्या कहूँगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और गिराने का खर्चा भी सुपरटेक बियर करेगा। तो यू कैन एज्यूम अस कि हमारा कितना बड़ा पेनफुल हमारे लिए था कि उस बिल्डिंग को हम लोगों ने बनाया सेफली, उस बिल्डिंग को हम लोगों ने गिराया सेफली, एंड उस बिल्डिंग को गिराने का पैसा हमने दिया। उसके अलावा जो उसमें जो होम बायर थे, हमारे होम बायर का पैसा हमने लौटाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वी हैव रिटर्न ऑल द मनी टू द होम बायर। उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा एक एक आदमी का लौटा दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला कि CBRI इसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज देखेगी, उसको फीस भी दी जाएगी, उसको फीस भी हमने दी। ऐसी एजेंसी हम लोग लेके आए कि जिससे कि सेफ डिमोलिशन हो सके, एडजॉइनिंग बिल्डिंग को कोई किसी तरह से खतरा ना हो। मतलब राहुल जी, आई विल टेल यू प्लीज लेट मी एक्सप्लेन यू कि उस दिन जिस दिन ये बिल्डिंग गिरनी थी, पूरी रात में सो नहीं पाया था कि किस तरह से वो बिल्डिंग सेफली गिर जाएगी, एडजॉइनिंग एरिया को कोई नुकसान ना हो। तो ऊपर वाले ने ये हमारा बहुत ख्याल रखा, सबका ऊपर वाले की विशेष हुई कि बिल्डिंग सेफली गिर गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो गया। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे लिए है और मैंने उसको किया है। लेट्स टॉक फॉर अ मोमेंट अबाउट व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर। इस वक्त करीब 20,000 आपके फ्लैट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में हैं। जितनी सुपरटेक के बारे में चर्चा हुई जब वो टावर्स डिमोलिश हो रहा था, इस वक्त आप शायद देश के सारे सबसे ज़्यादा जाने पहचाने बिल्डर्स में एक हो गए, क्योंकि सबने देखा कि सुपरटेक के टावर्स ढहाए गए। लोगों का जो विश्वास एक तरीके से अब सवाल के घेरे में आ गया है कि ये जो 20,000 टावर बन रहे हैं, क्या मेरा घर मिलेगा, क्या मेरा पैसा महफूज है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा टावर भी आगे चल के गिरा दिया जाए। उस सब पे आपका क्या कहना है? राहुल जी, पिछले, जैसे मैंने अभी बताया, पिछले 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास है, लोगों का ट्रस्ट था। लगभग 70,000 मकान पिछले 40 सालों में डिलीवरी दिए हैं
और सेटिस्फैक्टरी डिलीवरी दिए हैं, उनका जो है उनका एक विश्वास आज हमारे साथ है। और मैं आपको एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, अपने ग्राहकों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह 70,000 लोगों को हमने पोजीशन दिया, उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दिया, उसी तरह से बाकी 20,000 घरों को भी टाइमली पोजीशन दिया जाएगा। उनको सभी प्रोजेक्ट के ऊपर आज की डेट में भी फुल स्विंग में काम चल रहा है और इस डिमोलिशन का इम्पैक्ट उसके बाकी बचे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर या बाकी बचे उन फ्लैटों के ऊपर कहीं नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग है। बाकी सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, सारे फ्लैटों पे काम हो रहा है और 70 से 80% काम हम लोगों ने सभी प्रोजेक्ट्स पे काम कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी सारे टाइमली विद इन 2 ईयर उन 20,000 लोगों को पोजीशन दिया जाए। एक आखिरी सवाल, ये जो जजमेंट में पढ़ रहा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, एमआर शाह की, जिसमें वो कहते हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस इज रिप्लीट विद इंस्टेंसेस व्हिच हाईलाइट द कल्यूजन बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ नोएडा विद द appellant and its management. The case has revealed a nefarious complicity of the planning authority in violation by the development of the provisions of law. ये दोबारा इस तरह की चीज़ ना हो, आपके हिसाब से इस पूरे वाक्य में लेसन क्या है, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को क्लीन अप किया जाए? आपके ऊपर ये बीती है, आपके ऊपर तमाम चार्जेस ये लगे हैं, इस तरह की चीज़ दोबारा किसी के साथ ना हो, उसको कैसे इंश्योर करें आर के अरोड़ा? देखिए राहुल जी, मेरा इसमें एक ही कहना है कि हम लोग ना रूल अबाइडिंग कंपनी हैं और पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम रूल को बहुत डीपली फॉलो करते हैं और बिल्डिंग का अप्रूवल करने के बाद ही बिल्डिंग बनाते हैं। ये बात जरूर है कि आज इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है और इससे एक तरह से ना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द अस एंड फॉर द इंडस्ट्री आल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क केवल आज सुपरटेक के ऊपर ही नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क पूरे एंटायर अप्रूवल के ऊपर आ गया है कि अप्रूवल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और किस जो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लगभग 7 से 8% का जीडीपी ग्रोथ आता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लगभग 250 एंसिलरीज को साथ साथ इसके साथ जुड़ी होती हैं, और ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को जो अनस्किल्ड मैन पावर, माइग्रेंट वर्कर इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर आज कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक या ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर कोई डालने से पहले, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ही विल हैव द थॉट, सोचेगा कि कहीं ये बिल्डिंग बन के कहीं इस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या कोई इस बिल्डिंग बनने के बाद इस तरह का डिमोलिशन तो नहीं होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा तो इसमें एक ही कहना है कि एज ए रूल अबाइडिंग कंपनी हम लोग प्रोजेक्ट का अप्रूवल बराबर करके चलें। हम प्रोजेक्ट की अप्रूवल की एक ट्रांसपेरेंसी अपने होम बायर के साथ रखें, प्रोजेक्ट की अप्रूवल को शेयर करें। अगर कहीं इसमें कमी रही है हमको एक्सप्लेन करने में, होम बायर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखने में, तो हम लोग उसको आगे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और करते रहेंगे। होम बायर के साथ हम जो है अपना रिलेशन बरकरार रखेंगे, उनको ट्रस्ट बना के रखेंगे। आई लीव इट ओवर देयर। आर के अरोड़ा, everyone has been trying to hunt you down, chase you down, try and get you to comment on all the multiple charges that have been leveled against you individually and against Supertech. You've given your side of the story. I don't want to play judge and jury. We've asked you the questions that needed to be asked. You've given us your side. What is very important though to ensure is that this doesn't happen again. This collusion between the builders and the authorities, which the Supreme Court speaks of in its judgment, which is what led to the demolition of the Twin Towers, that isn't going to happen. The trust deficit that you spoke about is very important. There has to be transparency and trust between the builders and the buyers. We leave it over there. R.K. Aroora, for joining us on the News Track. Thank you. The only channel to confront Supertech and the only channel to name all those who were found to be part of that nefarious collusion between Supertech, Noida authorities and other agencies. And we're taking all of their names here on India Today
the only channel to do so. R.K. Arora, chairman of Supertech, he has secured bail. We gave him a fair chance. He answered our questions here on India Today. Mukesh Goel, planning manager, Noida Authority, suspended. Vimla Singh, planning assistant, Noida Authority, suspended. Anita, planning assistant, UP SIDC, suspended. Rituraj, GM planning, Yamuna Authority, suspended. Tribhuvan Singh, CPA planning department, charge sheeted. VA Devpuraji, CPA planning department, charge sheeted. Rajpal Kaushik, town planner, charge sheeted. Ashok Kumar Mishra, planner, charge sheeted. Babu Ram, project engineer, charge sheeted. Shailendra Kere, AGM group housing, charge sheeted. AC Singh, financial controller, charge sheeted. Rajpal Tyagi, ex-chief fire officer of Noida, booked. IS Soni, ex-chief fire officer Noida, booked. Mahavir Singh, ex-chief fire officer Noida, also booked. We've taken all their names here on India Today, the only channel to do so. Take a look at the people who are believed to have been involved in the towers of corruption. The Twin Towers are history. Meeting with an explosive end. Swallowed by giant cloud of dust. Reduced to mammoth piles of rubble. The towers of shame are gone. Thanks to residents in the neighborhood who launched a valiant battle for 9 years, challenging the mighty Babu builder nexus behind the illegal towers rising, and standing tall, despite violating all building norms. Supertech got official nod from corrupt officials of Noida Authority in 2012 to raise the towers to 40 stories. And now, a decade on, the rotten Babus and builder lobby are far from getting punished. Supertech chairman R.K. Arora had taken anticipatory bail to evade arrest after the Twin Towers got caught in a legal mess. 11 officials of Noida Authority are under scanner. Among them, 4 were suspended. Planning manager Mukesh Goel, planning assistant Vimla Singh, planning assistant in UP industry body UP SIDC Anita, general manager planning in Yamuna Authority Rituraj. Charge sheets have been filed against planning department officials Tribhuvan Singh and VA Devpuraji, senior town planner Rajpal Kaushik, town planner Ashok Kumar Mishra, project engineer Babu Ram, AGM in group housing department Shailendra Kaire, financial controller AC Singh. The FIR names 3 retired fire officials too: Rajpal Tyagi, IS Soni and Mahavir Singh, for violating norms and giving fire NOC to the Twin Towers. Crucially, those who played vital roles in erecting the monument of shame, those from Supertech, those from Noida Authority, and those from the Noida Fire Department have never been arrested, despite glaring proof of wrongdoing. Their cases are still caught in lengthy probe and departmental inquiry. With Kumar Kunal in Delhi, Bureau Report, India Today. Now remember, a lot of home buyers are worried because there are ongoing Supertech projects as well. There are people who already live in Supertech projects. R.K. Arora, the chairman of Supertech, has taken our question on that specific point. But let's list for you some of the other Supertech projects that are out there. Supernova, Sector 94 Noida, touted as the tallest building in India. It's coming up right now. North Eye, Sector 74 Noida, touted as one of India's tallest buildings. It's called North Eye. Then the Romano, Sector 118 in Noida. There's Eco Village, also by Supertech. That's coming up in Greater Noida. Golf Country, coming up on the Yamuna Expressway between Delhi and Agra.
When there's upcountry, this is also coming up on the Yamuna Expressway. So Supertech is awash with new projects that are coming up in a very, very big way. Now, the dubious rise of the Twin Towers before the demolition yesterday is a journey not many people are actually aware of. Let me just recount that for you. It started in November 2004 when Supertech was allotted this plot by the Noida authorities. This very plot right here. 14 towers with 10 floors were allowed, sanctioned under the Noida Area Building Regulations of 1986. June 2006, additional land was also allotted. December 2006, plan was modified to 15 towers with 11 floors. The plan was governed by the Noida Authority Building Bylaws 1996. November 2009, plan was revised to include 2 more towers, Apex and KM. That's the name of the 2 towers that came crashing down yesterday. This was planned with 24 floors, and in November 2009, the construction actually began. March 2012, floors of the Twin Towers increased from 24 to 40. There was a modification under the 2010 Noida Building Regulations. December 2012, Emerald Court residents moved the Allahabad High Court, and that's where the entire legal case began and the unraveling of the Twin Towers essentially began. Because in April 2014, the Allahabad High Court ordered the demolition of the Twin Towers, and the Twin Towers were then sealed. Began construction in 2009, 2014. The Twin Towers were sealed, construction stopped. May 2014, Noida Authority and Supertech moved to Supreme Court. August 2021, last year, this time last year, the Supreme Court said nothing doing, it has to be demolished. And finally, the demolition took place yesterday, as the entire country saw. After the spectacle, after the infamy of what happened yesterday, the site of the demolition has become a spectacle, a tourism site for selfie seekers, for those wanting souvenirs of the debris. Take a look at what's become of the site that once held 2 towering skyscrapers. India's biggest demolition ever. 2 skyscrapers, now 80,000 tons of rubble. And all it took was 9 seconds. But earlier, as the clock ticked for the Twin Towers, there was excitement and anticipation. With hundreds of onlookers gathering at nearby sites, buildings and rooftops to watch the iconic towers fall down like a pack of cards. Locals and visitors from outside Noida had thronged the site a few hours before the demolition to take a final look at the structures. Many were seen clicking selfies and taking videos before they are pulled down and consigned to chapters in history books. Then came the mammoth demolition, leading to excited cheer from the crowds. Celebrating the death of the Twin Towers, symbolizing corruption and Babu Builder nexus. While no one was allowed during the actual process of demolition, the situation changed drastically once the massive cloud of dust settled down. A steady stream of onlookers flocked to the rubble. The gigantic piles of concrete slabs, steel structures turned a virtual tourist spot. People were seen posing for selfies with the rubble in the background. Families and even children who had been watching the demolition from safe distances trooped in once restrictions were lifted by the cops.
ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो एक सभी लोगों के लिए एक सबक है और ये भ्रष्टाचार के लिए जो एक्शन लिया गया है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरी तरह जो अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, भारत के अंदर ये पहला एक्सपेरिमेंट है और विदाउट डैमेज किसी भी आसपास की बिल्डिंग को ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। Several residents of neighbouring high-rises were seen shaking a leg to dhol beats and celebrating. After a 9-year-long fight, the illegal towers of Noida finally faced an explosive the end. Bureau Report, India Today. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. This testing shows us that there is a vast potential in the commercial use of drones, especially in urban area. And this is a further step of creating an economically viable model. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events, the true story of our times. To document grief, the toughest assignment for any journalist to be. From those who matter. Women politicians going to stick up for each other. Of those who should matter. I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious medieval history have come knocking again. I hustle for the truth. On the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the Point with Preeti Chaudhary. At these times, only on India Today. Co-powered by RK Marble, Khoobsurat Imandari. In association with JioMart, Har Ghar Ka Mart.
Now, shifting our focus on 5 Live, a 19-year-old girl who was set on fire for turning down a man's proposal has succumbed to her injuries in Jharkhand's Dumka. According to the dying statement given to an executive magistrate, the victim had said that the accused had called her on her mobile phone about 10 days ago, pestering her to become his friend. The district administration now imposing Section 144 in a bid to maintain law and order amid widespread protests seeking justice. In fact, the incident took place in Dumka town on Tuesday when the accused, identified as Shahrukh, poured petrol on the woman from the outside of her window when she was fast asleep, set her ablaze. The victim, a student of class 12, had been first admitted. She was rushed to the Pulo Jano Medical College and Hospital in Dumka in a critical condition with at least 90% burns. Later, she was rushed to Ranchi's Rajendra Institute of Medical Sciences for better treatment. Unfortunately, succumbed. हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। देखिए, समाज में कई कुकृतियाँ वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। ये जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफ़ी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक्ट होता है। अगर अंकिता दूसरे धर्म की लड़की होती, उल्टा होती, लड़के दूसरे होते, आज वहां पर पॉलिटिकल पिकनिक राहुल गांधी भी मनाते होते और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होते। लेकिन अंकिता की जान अगर गया तो हेमंत सरकार के अनदेखा के कारण गया। अगर इसके एयर एम्बुलेंस या किसी चीज से एयरलिफ्ट करके ले गए होते, इलाज होता तो बच गया होता। All right, here's some big news that we're currently tracking. Haryana Minister Anil Vij has spoken out, says Sonali Phogat, the BJP leader and actor, met the Chief Minister, handed over a letter and suspected that some politicians could be behind the death. In fact, he says that the family of Sonali Phogat has suspected that there could be some politicians involved in the case as well. The family is not satisfied with the probe that's currently on and hence have demanded a CBI probe in the matter. Let's take a listen. Kamaljeet speaking to Anil Vij on the same. 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई है, क्या सीबीआई जांच होगी नहीं होगी, क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर खट्टर सरकार ऐसा बोलती है तो वो करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं अनिल विज, जो कि गृह मंत्री हैं हरियाणा से। सर, होगा नहीं होगा ये काफ़ी फ्लिप फ्लॉप सा चल रहा है, आप साफ कर देंगे क्या हरियाणा सरकार का क्या रुख है इसके ऊपर? बीजेपी नेता रही हैं, आप लोगों के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रही हैं, रहस्यमय मौत हुई है, तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह से अरेस्ट हुए हैं, क्या रुख रहेगा हरियाणा सरकार का? सोनाली फोगाट के परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की इसमें हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है, इसलिए इस केस की सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो हमने गोवा सरकार को लिख दिया है स्ट्रांगली रिकमेंड करके कि इस केस की सीबीआई जांच कराने के लिए वो कार्रवाई करें। सर, अगर ऐसा माना जा रहा है कि तफ्तीश ठीक से चल रही है तो देरी क्यों हो रही है और कहाँ पे हो रही है कि सीबीआई को प्रूफ दी जाए? ना, ये तो गोवा सरकार कर रही है ना जी, जो वहाँ की पुलिस कर रही है, और जहाँ तक भी वो पहुँचा है परिवार उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तभी परिवार ने लिख के दिया है कि हमारी सीबीआई की जांच कराई जाए। तो हमने उनके
All right, we heard what he had to say. Sonali Phogat's family members now asking for a CBI probe, and it seems like the Goa CM and the Haryana CM backing the same. On the other side of a short break, Lingayat Seer in Karnataka has been accused of raping minors. He claims this is nothing but conspiracy and returns to his normal activity back at his mutt. Over 72 hours, this influential religious pontiff has not been arrested, not even summoned for questioning. More details up next. Stay with us.